Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call. First, we'll start with technical and derivatives outlook. If you see yesterday's trading session, it was a more of a lackluster trading session, trading in a very narrow range of near about 40-50 odd points, and index was off by nearly 30 odd points. But if the I think on the blue side, index is holding 19,300 support levels, and it witnessed two times the whipsaws from those levels. So I guess that 19,300 is a crucial base for the Nifty. Again, reiterating the same thing. 19,300 will be crucial for the index. If index is holding above this level, so we need to check that if index reaches over 19,500, so we can say that it would be a short-term intermediate base for the index from here on, or else we would be slipping down going ahead forward. Coming to the sector specific front, yesterday sectors like metals and realty were showing some strength, while the chemical sector after the prices rebound from the lows, we could see a good traction in chemical stocks like the likes of Balaji Amines, Alkyl Amines, SRF, Sony Chemicals, and most of the stocks were trading with a very huge volume. So this sector could be in a radar for next couple of days or couple of weeks, and until that, so that should be kept on watch for the traders. Secondly, if you see Nifty, PSU Bank and FMCG pharma sectors were on the losing side and they closed in the red. Now coming to the Bank Nifty also was trading in a broadly in a very narrow range of 200 odd points, and we could see a very flattish close of near to 44,500 odd zones. The Bank Nifty is also in a where we can see in a narrow range only until unless 45, 44, 500, 44, 700 is not taken out, we would be seeing any lackluster movement. And on the flip side, on the lower side, 43, 500 again acting as a crucial base for the index going ahead. Coming to the futures data, if we see yesterday, futures were also seeing a very near long built up of near just close to 389 contracts, and PCR was also flattish at 0.97. And similarly for the Bank Nifty, also Bank Nifty futures saw short covering to the tune of 0.92, and PCR also dropped from 1.06 to 0.91. Coming to the options data for the coming expiry, options are showing that 400 and 19,300 would be acting as a support and resistance for the Nifty, while as on the Bank Nifty front, if we see 44,500 would be acting as a hurdle. Well, on the put side, if you see 44,000, 43,800 is acting as a good support over there. Stocks that should be kept on radar and which are looking on good charts are Deepak Nitride, Pidilite Industries, SRF, Sumi Chemical. These stocks are looking good on charts and should be kept on radar. Secondly, coming to the FIS stats, FI have added long position by 8,000 odd contracts, so they are net long by 22,800 contracts. The ratio stands at 45%, so FI is also covering their shorts slightly in the futures and options segment. Secondly, in the cash, if we see their cash, they were positive by 61 odd crores, while DIs were also buyer by 305 odd crores. Good long builders for the August expiry were witnessed in NTPC, Asian Paints and Havels, where shorts were witnessed in Hendapetro, Dabar and Syngenta. Coming to the overnight, if you see yesterday, there was a rally in the Nasdaq and the Dow future. Dow futures were also on the trading on the positive side. So I guess that could be a positive sentiment continuing today in the index also and in the Asian markets also. If Nifty showing a flattish opening of 10 odd points, we have to see that again. If we hold yesterday's previous low, so we would be running towards 19,400, 450 odd level to test those soon. So that's it from my end. Hand over to Bhavesh sir for more updates. Hi, good morning, team. So first, we release a monthly cement update. So in cement, last 1 month we have seen that prices have declined by 1%, which is mainly marginal decline. Energy prices have increased slightly from July lows. So from July 23, it's up by 27%. So this is a little bit of negative, but overall, in terms of EBITDA per ton for last for in Q1 FY24 was nearly 918, and in Q2 also we expect the EBITDA per ton to remain in the same range because Q2 is again seasonally weak quarter given the monsoon season. And in terms of view, we think Ultratech has more upside than anything, any other stock in cement in large caps, and that too is limited to only 9%. So it's kind of more of a neutral thing. Secondly, on chemical pricing, so some of the chemicals have recovered in the last 1 month. So in the last 1 month, some acetic acid prices have increased from rupees 57 per kg to 72 rupees per kg, and the major beneficiaries would be Jubilant Ingreva, Lakshmi Organics, and GNFC.
Just similarly, light soda ash prices have increased from 2 rupees $285 per ton to $373. So this is again positive for companies like Tata Chemicals and GHCL, which are largest producers. Secondly, to lastly, to sum up, the additional fiscal measure by Chinese government to spruce up weak economy are expected to improve the demand, and we expect that pricing pressures should recede here on for many chemical companies. So the some other company that we are positive on is Alkyl Amines, Balaji Amine, Deepak Nitrite, and Deepak Fertilizers. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. First update on Lupin. The company launches a propranolol long-acting capsule in Canada. Next update on TrickGen. Company has received work order of around rupees 100 crore from Digital India Corporation for providing technical manpower to Looks project. Then next update on Anupam Rasayan. Company is close to acquiring Austria's ESIM chemicals as per media sources. Then next update on Maruti. Maruti is looking at investing about 45,000 crore to double production capacity to 4 million units per annum by the end of the decade. Then next update on GR Infra. Two arm execute concession agreement for project worth around 1,457.2 crores with NHAI. Uh, Last update on Central Bank of India. Bank enters into strategic co-lending partnership with IKF Finance to offers MSME loan at competitive rates. That's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar, sir. Thank you and over to you, sir. Thank you. Good morning, team. Many chemical stocks have been in focus as price has stabilized and they have increased. So I think there will be a morning dip in chemical stock, post which the rally might continue today or tomorrow. Somebody looking at 10-15 days, I think chemical stock, quality chemical stock is where we can see a good return. So Atul, SRF, Deepak Nitrate, Alkali Amines, Deepak Fertilizer, DCW, Clean Science, Ather Industries, Vinati Organic, Gujarat Alkali Chemical, GNFC. These are few stocks which looks very good. Tatawa Chintan Pharma came. They said they have raised 200 crore through QIB. They have placed their issue to marquee investors. The discount was hardly 4%. But Goldman Sachs, Nippon, ICICI Pru, Unichem, ICICI Pru, three major funds have taken. There are about 9 funds which have totally taken, but these are they have taken more than 5%. So that is very good. Unichem receives ANDA approval for US FDA for heart treatment. Anupam Rasayan news. Anupam Rasayan has in one statement said, we are not in talks. I don't know which one is true. Airtel is planning to raise Uganda's biggest IPO to raise about 260 million in dollar term. If that happens, it is very positive for Bharti Airtel because Bharti Airtel has huge debt and they have to reduce the debt. And if they can raise 216 million by IPO, it can be, they can use this to repay at least Uganda debt. JSW Group is in advanced talk to acquire Chennai factory of Ford Motors. JSW Group wants to enter EV, electric vehicle segment. And the Chennai facility of Ford Motors, it has 350 acres. The factory had an annual production of 2 lakh vehicle and 3,40,000 engines. So this will be positive, and most of the EV segment is based out of Tamil Nadu and Karnataka. So that also will give them more engineer this thing. Adani Total Dharma LNG terminal will achieve peak capacity by 2024. That is what CEO has said.
The LNG terminal has a capacity of 6.5 million ton LNG capacity. Dharma port is one of the largest in India for this LNG capacity. IOC and GAIL are two users of the Dharma LNG terminal already. SBFC Finance, no, they came with the results. They announced a profit after tax of 47 crores, but a new listing. So I don't think a lot of data is available. But in their presentation, 162 branches, they talk about AUM of 5,327 crores. So the presentation today is available. But Gokul Das Export, has taken a company called Atcro. Yesterday we informed the stock was 20% higher, but yesterday there was a con call, so we have an update on the con call, and the con call is very interesting. 95% of the production is exported to USA. Now, so almost everything is exported. Kenya is a duty-free access to US market. So they have two countries where they produce. So 85% comes from Kenya and 15% from Ethiopia. So both are duty-free access, but Kenya has a biggest advantage. They don't have taxes. 10-year tax holiday is also there in Kenya. So their capacity utilization at currently is 90%. And there is a capex which is done, which will come on stream end of next year. So that will add more capacity to them. And very important, they source raw material. So 60% of the raw material is from China and 40% from India and Pakistan. So they can rationalize. And when you see the number of clients, no, the client, only one client, there is a overlap. Otherwise, the new company, all clients are new. So that will give more access to Gokuldas unit in India. So that will be a major beneficiary. Kenya has a higher labor cost, 190 to 210 is the cost, whereas Ethiopia labor cost is 110 to $120. So that way, Ethiopia operation being 15% can be scaled up, but something where synergy can be done is Gokul Das. Now working capital is only 60 to 65 days, whereas a new company it is 110 days. So you can rationalize, improve efficiency, and that will lead to higher margin. But there are few things where the company needs to work. They will have 1.5 to $2 billion by FY24. So overall debt is very high. So that will be something they have to reduce over a period of time. Now by FY25, the debt will be 1.5 to $2 billion. So, but now we visited two other textile companies previously. One was Arvind and other was Zindal Worldwide. But Arvind made a point. Previously, somebody can audit and give the report. A third party audit was accepted by these multinational companies. Today, that is not the case. No, the company has to send their representative to see the whole unit, the way it is manufactured, whether junior people or kids are employed, the working condition. So Arvind told us that Arvind is one of the largest denim manufacturers in the Asian region. They told us that today even tailoring is what something they want. They want the end product from the start to end. From cotton, they want them to knit, or weave, and then making of denim. That is a cloth material, and even the final product they want from them. So that is where Arvind also has put a new factory in Bangalore. So 90% of their garmenting comes from Bangalore. Even Gokuldas export is in Bangalore. They are also in Bangalore. Availability of quality, good labor is there. So I think that has become a major hub.
So India will be a good garmenting destination. So we like Gokuldas, we like Arvind, we like KPR Mills. So these are few companies which are doing very good in this space. So for a long-term investor, garmenting is something we need to look at. Quality companies in that segment should be something to watch out for. With that, over to you, team. या थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी अपडेट्स के साथ। कल के सेशन में हमने देखा कि केमिकल स्टॉक्स जो है वो काफी फोकस में आए थे। बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स ने एक अपवर्ड मूवमेंट देखा था। ओवरऑल जो है ये एक प्राइस स्टेबिलिटी का इम्पैक्ट है अराउंड केमिकल्स। हालांकि आज के दिन की अगर बात करें तो इनिशियल जो है मॉर्निंग सेशन में एक डिप बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, बट 10-11 बजे के बाद एक अगेन अपवर्ड मूव केमिकल स्टॉक्स में दिख सकती है। ओवरऑल अगले 10 से 15 दिन के लिए केमिकल स्टॉक्स काफी फोकस में रहेंगे, पॉजिटिवली रडार पे रहेंगे। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर बात करें तो अतुल, एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, दीपक फर्टिलाइजर्स, जीएनएफसी, गुजरात एल्कलीज, ये कुछ ऐसे केमिकल स्टॉक्स है जहाँ पे नजर रखी जा सकती है। तत्व चिंतन फार्मा की अगर बात करें तो कंपनी ने ₹200 करोड़ का जो है कैपिटल रेस किया है थ्रू क्यूआईपी। टोटल 9 फंड्स जो है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है भारतीय एयरटेल पे, जहाँ पे कंपनी एयरटेल जो है ये प्लान कर रही है युगांडा में एक लार्जेस्ट आईपीओ रेस करने का। ओवरऑल भारतीय एयरटेल के लिए एक पॉजिटिव अपडेट रहेगा क्योंकि कंपनी के पास फिलहाल बहुत ज्यादा डेट है एंड जो है फंड्स एलोकेट करके उनको जल्दी से जल्दी ये डेट क्लियर करना है। जेएसडब्ल्यू की अगर बात करें तो जेएसडब्ल्यू प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर करने के लिए। अभी की अगर बात करें तो कंपनी के पास 350 एकर्स की लैंड है चेन्नई में, तो एक डेफिनेटली पॉजिटिव जो है अपडेट रहेगा जेएसडब्ल्यू के लिए। इसके बाद अगर गोकुलदास की बात करें तो गोकुलदास का एक कॉन कॉल था जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिले हैं। कंपनी की अगर बात करें तो 95% जो इनका प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है यूएसए में। इनके वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो कंपनी के पास फिलहाल नेक्स्ट 60 to 65 डेज का वर्किंग कैपिटल है। एट द सेम टाइम इनका जो एक्सपेक्टेड डेट है बाय FY 2024 वो है 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स का। इसके अलावा हमने जो है अरविंद के मैनेजमेंट से डिस्कशन किया था, तो कंपनी ने एक पॉइंट बताया कि कंपनी जो है टेलरिंग जो है एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्पेशली डेनिम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें। इसी के लिए कंपनी ने जो है एक नई फैक्ट्री भी जो है लॉन्च किया है बैंगलोर में, जहाँ पे 90% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हो रहा है। सो ओवरऑल अगर साउथ इंडिया की बात करें, इंडिया की भी बात करें, तो इंडिया एक हब बन रहा है फॉर गारमेंटिंग डेस्टिनेशन एंड आगे चल के एक काफी पॉजिटिव अपडेट रहेगा, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स रहेगा बहुत सारे गारमेंटिंग कंपनीज के लिए, जैसे केपीआर मिल्स हो गया, अरविंद हो गया एंड द सेम टाइम गोकुल दस लिमिटेड हो गया। सीमेंट सेक्टर के ऊपर अगर अपडेट ले तो हमने बहुत सारे सीमेंट डीलर्स के साथ इंटरेक्शन किया एंड वहाँ पे एक सजेशन ये मिला है कि सीमेंट प्राइसेस ऑल इंडिया लेवल पे मार्जिनली डिक्लाइन हो गए 1% से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, अगर अगस्त 2023 की बात करें। हिस्टोरिकली जो Q2 है ये थोड़ा सा लीन पीरियड रहता है फॉर सीमेंट प्राइसेस एंड यही चीज इस साल भी विटनेस की गई है। ओवरऑल पोस्ट मानसून पीरियड पे सीमेंट प्राइसेस पे एक नजर रहेगी। एनर्जी प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगस्त 23 में एक बढ़त देखने मिली है विद एग्जिट प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कोल जो है वो 27% से ऊपर गया है फ्रॉम द लोज ऑफ जुलाई 23। फ्यूल प्राइसेस के ट्रेजेक्ट्री जो है वो भी जो है डाउनवर्ड रही है। 3 से 6 महीने की अगर बात करें तो जो ऑन फ्रेट जो जो फ्रेट है बेसिकली वहाँ पे डीजल प्राइसेस फ्लैट है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगस्त 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल इस सेक्टर में अगर देखें तो हमारे जो है कैलकुलेशन के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे मैक्सिमम अपसाइड देखने मिल रहा है 9% का करंट प्राइस से। केमिकल सेक्टर की अगर बात करें, केमिकल प्राइसिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे केमिकल प्राइसेस जो है वहाँ पे एक हेल्दी अपटिक देखा गया है। ओवरऑल केमिकल प्राइसेस एक स्मार्ट रिकवरी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड रिकवरी। एट द सेम टाइम जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं
स्पेसिफिकली एंड इंडिया में चाइना में। एट द सेम टाइम जो चाइना की इकोनॉमी से जो है स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस आ रहा है उसकी वजह से हमने जो रिसेंटली एक मंथली रिपोर्ट रिलीज किया था वहां पे हमने एक जो फॉल था सर्टेन केमिकल प्राइसेस में उसको हाईलाइट किया था। पिछले मंथ की अगर बात करें तो एसिटिक एसिड के प्राइसेस जो है उसमें एक शार्प इंक्रीज देखने मिला है फ्रॉम ₹57 पर केजी टू ₹72 पर केजी। एसिटिक एसिड एक की रॉ मटेरियल होता है कुछ प्लेयर्स के लिए, जैसे जुबिलेंट इंग्रेविया हो गया या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हो गया। एंड इसके प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के प्राइसिंग पावर में भी एक बढ़त देखने मिलेगी। तो डेफिनेटली जुबिलेंट इंग्रेविया एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एट द सेम टाइम जीएनएफसी जैसी कंपनीज इसके मेजर बेनिफिशियरीज रहेंगे। लाइट सोडा ऐश प्राइसेस की अगर बात करें स्पेसिफिकली इन चाइना तो वहां पे भी एक $285 पर टन की बढ़त देखने मिली है। सोडा ऐश सप्लाई जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा सा जो इसका सप्लाई टाइट रहेगा बिकॉज ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन इन चाइनीज कैपेसिटीज। ओवरऑल इस पूरे चीज के जो मेजर बेनिफिशियरीज रहेंगे इंडियन मार्केट में वो है टाटा केमिकल्स एंड जीएचसीएल। अगर मार्केट का अपडेट ले तो कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज शेड किया था, कोई मेजर मोमेंटम देखने नहीं मिला था। सो डेफिनेटली आज के सेशन में हम एक जो है एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन आइदर साइड। निफ्टी की अगर बात करें तो जो एक नैरो रेंज आज के सेशन के लिए बन के आ रही है वो है 19300 से लेके 19500 तक। अगर 19500 ऊपर की तरफ निफ्टी ब्रेक करता है तो एक बुलिश मूव हमको देखने मिल सकती है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट स्पेसिफिकली यूएस यूरोप के मार्केट देखिए तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बन रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अगेन ओवरऑल एक साइडवेज मोमेंटम है, थोड़ा सा चॉपी हो सकता है। जो एक बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी के लिए वो है 43500 से लेके 45000 तक। अगेन कल के सेशन में जैसे हमने बात की केमिकल स्टॉक्स फ्लेवर में रहते हैं तो आज के दिन अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। टाटा केमिकल्स, सुमिटोमो केमिकल्स, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, ये कुछ केमिकल स्टॉक्स है जहाँ नजर रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भी एक स्टॉक है जहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है। कल के सेशन में एफआईआईज ने ओवरऑल 61.51 करोड़ की बाइंग की थी जबकि डीआईआईज ने भी 305.09 करोड़ की बाइंग की थी। फ्यूचर्स डेटा पे अगर नजर डाले तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला है वो है एनटीपीसी, एशियन पेंट्स एंड हैवेल्स। वही कुछ स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप कल के सेशन में देखने मिला था वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डाबर एंड सिंजिन। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल। हैव अ गुड डे।